Hello students, welcome back again. In this class we are going to discuss about the topic industrialization under the British. है ना? In this topic we will discuss about the industrial system. What had been developed after coming the British, means during the colonial period. Okay, but before that we will also know about the industrial system before coming the British, before the colonial period. Okay, before the colonial period, India developed their self-sufficient economy. During that time, in the rural area, people mostly busy to do the agricultural activities, and some of them were artisans. They were producing different kinds of things. Okay, in this way the artisans making the things and they were giving them to the farmer, and farmer giving them, okay, grains. In this way they were interdependent on one another. Sometimes artisans also got the prize from the nobles, from the nawab, from the king, and from the landlord. Okay, as they gave their goods to them, after that they were got prize. In this way they developed their self-sufficient economy. But at the time you should also know that in India there were some industrial system, okay, some industrial workshop. Okay, at the time there were some industries what had been opened by the Indian people. They were preparing different kinds of things, okay, and that could be prepared in the India, such as textile, okay, such as cloth, okay, that could be prepared in the India, okay, and that was having a fine quality. आ रहा समझ में? उसकी जो क्वालिटी होती थी वो बाकी अन्य देशों से अच्छा होता था. तो इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि उस समय क्या था कि भारत जो था वो इंडस्ट्रियल वर्कशॉप था पूरे वर्ल्ड का. ठीक है, पूरे विश्व में अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें पूरे विश्व का जो भारत था वो एक इंडस्ट्रियल वर्कशॉप था. बिकॉज इन इंडिया सम गुड्स प्रिपेयर्ड, ओके, एंड दैट हैड हाई डिमांड इनटू द अदर countries, okay, and the traders coming into the India to buy that goods. Now see, in the 18th century India was the largest exporter of the textile. Yes, you know that textile industries what had been developed in the India, that was not new. Means in India weaving was not a new process. We know about the weaving of cloth from the Harappan civilization, okay, and you know till the 18th century we were able to prepare the fine quality of cloths. We were able to weave the fine quality of cloths that had great demand into the European countries and some other countries, okay, and because of that, India became the largest exporter of the textile. Why? Because the trader from the other countries, okay, they were coming into the India to buy the different kinds of cloth what were prepared in the India in different places. Okay, now see, there were several port cities, and the India became the largest exporter of textile. For exporting this textile, okay, some cities developed as the port, okay, means numbers of the traders coming into the India by the sea route, and they were coming into the country to buy the cloth, okay, as the cost of the sea, some cities started to develop. They were known as the port cities. Basically port cities developed as the eastern coast and the western coast, okay, they were became the main center from where, okay, goods exported to the other countries. That centers were Surat, Calicut and Masulipatanam. Okay, वो मेन सेंटर कौन कौन से थे? तो सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम. Okay, these are the main center from where goods exported to the different countries. Basically Surat and Calicut, these centers developed in the western coast of the India, and Masulipatanam was in the eastern coast. Okay, from the eastern coast and western coast these goods sent into the different countries. Okay, these goods sent from the
eastern coast to the Malaya, Indonesia and some other eastern countries, and from the western coast textile goods sent to the Europe and Arabian countries. Okay, actually, as we have known that the some trading centers developed into the Surat in the India, such as Surat, Calicut, Masulipatanam, and from that goods sent to the eastern countries and to the western countries from the India. Okay, but from where, okay, from which place these goods prepared? Okay, but on which place these goods prepared? Now we will know. Actually, these goods produced in the Dhaka, Bharuch and Madurai. Okay, Dhaka, Bharuch and Madurai. These were the major center from where the fine quality of textile, okay, produced. आ रहा समझ में? यहाँ से क्या होता था, ढाका, बरोच और मदुराई ये बहुत ही फेमस प्लेस थे जहाँ से बहुत फाइन क्वालिटी के टेक्सटाइल तैयार किए जाते थे, फाइन क्वालिटीज के कपड़े तैयार किए जाते थे. Now we will know about the major cotton textile. Okay, actually you should know that some cotton textile were in the great demand into the European countries. Okay, now we will know about them one by one. Now first is muslin. Actually muslin was a very fine quality of cloth that was basically produced in the Bengal in Dhaka. ठीक है, जो मुस्लिन क्लॉथ था वो बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होता था? वो बेसिकली प्रोड्यूस होता था बंगाल में. ठीक है, बंगाल के ढाका रीजन में. ढाका एट प्रेजेंट कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, लेकिन उस समय वो कहाँ पे था? उस समय वो बंगाल प्रोविंसेस में था. जो ढाका है, ठीक है, जो ढाका है वो बंगाल प्रोविंसेस में था. आज कहाँ है? बांग्लादेश में है. ठीक है, ओके. नाउ दिस क्लॉथ डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द प्लेस ऑफ मोसूल. एक्चुअली मुस्लिन क्लॉथ गॉट इट्स नेम by the place of Mosul. Mosul was in the Iraq. Okay, when Iranian traders came into the India, they bought muslin cloth from the Bengal and they sold them into the Mosul. Okay, Mosul was a market which was in the Iraq, from where European traders, okay, buying this cloth, European traders buying this cloth, and they were give a name to this cloth as a muslin. Why it was known as the muslin? Because this cloth they bought from the place of Mosul which was in the Iraq. ठीक है, ध्यान से समझिए. जो मुस्लिन क्लॉथ है, मुस्लिन क्लॉथ का नाम मुस्लिन पड़ा कैसे? ठीक है, तो मुस्लिन क्लॉथ का नाम मुस्लिन इसलिए पड़ा क्योंकि यह कपड़ा जो था वो मोसूल नामक मार्केट में सेल होता था. यह मोसूल जो स्थान है वो कहाँ था? इराक में था. ठीक है, तो जो इराक के ट्रेडर्स थे वो भारत में आकर के बंगाल से इस कपड़े को खरीदते थे और ले जाकर के मोसूल नामक मार्केट में सेल करते थे. ठीक है, और मोसूल से जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उस कपड़े को खरीद के यूरोप में ले जाकर के सेल करते थे. मीन्स यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वे अब भारत में उस समय नहीं आते थे, वो उस समय भारत से कपड़े नहीं लेते थे, वो मोसूल से कपड़े खरीदते थे. ठीक है, तो इसलिए उस कपड़े को इन्होंने क्या नाम दिया? मुस्लिन नाम दिया. ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज छिंट. नाउ सी, दिस वॉज प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल विथ मल्टी कलर्स. ठीक है, अब छिंट क्या है? छिंट क्या था कि दिस वॉज a type of cloth in that we can see some small flowery designs. Okay, and that was known as the chint. Why it was known as the chint? Now see, this cloth, basically this cloth produced in the Masulipatanam. ठीक है, this cloth produced in the Masulipatanam. Masulipatanam is in the आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो जो छिंट क्लॉथ है वो कहाँ प्रोड्यूस होता था? वो मसूलीपट्टनम में प्रोड्यूस होता था. ठीक है, दिस क्लॉथ डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द हिंदी वर्ड छिंट. ठीक है, अब छिंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं जिसपे छोटे 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 फूल बने हुए हैं. ठीक है, तो वो एक जैसे छींट जैसा लगता है. छींट मतलब छींटा आ जाना, है ना. जैसे मान लीजिए कि हम सड़क के किनारे खड़े हैं और कोई ट्रक वाला पास कर रहा है और सड़क में थोड़ा सा गड्ढा है, उसमें पानी है, तो सड़क में जब उस गड्ढे में
है ना, जिस गड्ढे में पानी है अगर उसमें ट्रक का पहिया जाएगा तो क्या होगा, उससे कुछ कीचड़ हमारे ऊपर आ जाएंगे, शर्ट पे लग जाएंगे तो छोटे छोटे छींटे पड़ जाएंगे, है ना। तो वैसे ही है ना, उसमें जो कपड़ा तैयार किया जाता था मछलीपट्टनम में, उस कपड़े में छोटे छोटे फ्लावरी डिजाइन्स बनाए जाते थे, है ना। और फ्लावरी डिजाइन्स छोटे छोटे बहुत सारे बनाए जाते थे, जिसकी वजह से उस कपड़े को क्या नाम दिया गया, छींट। भारत में उसको हिंदी में क्या कहा जाता था, छींट, है ना। एंड जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या कहा, उसको छींट कहा, ठीक है। दे गेव देम अ न्यू नेम, व्हाट, छींट, ओके। मींस यू कैन सी हियर देयर इज गिवन this cloth derived its name from the Hindi word chint, okay. Chint word is used by the Indian people, in this is the Hindi word, but European gave them a new name, that name was chint, okay. And this was colorful flowery design, means numbers of these small colorful flowery designs depicted in the cloth, so that that cloth was known as the chint, okay. Next is calico. This was plain white unbleached cotton fabric, है ना, this was plain cloth. Calico was the plain cloth. And when European traders came in the India, first they landed at the place of Calicut, okay. Calicut is near the in the Kerala. As they landed at the place of Calicut, okay, they bought spices from that place, and they also bought some fine quality of cloth, okay. They taken out that into the European market and sold them at the high rate, okay. As they were buying that cloth at the place of Calicut, so that they were given them a new name, that name was calico, means they called that cloth by the name of calico, okay. Means this cloth got their name by the place of Calico. Okay, next is बंधना, ठीक है, नेक्स्ट इज बंधना। देखिए क्या है, दिस वॉज ब्राइट कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ। देखिए बंधना का मतलब क्या होता है, बंधना का मतलब होता है बांधना, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम बांधते हैं। तो एक्चुअली में उस समय क्या था कि कुछ छोटे छोटे स्कार्फ तैयार किए जाते थे, है ना, स्कार्फ जानते हैं ना, जो कि सर पे बांधते हैं, है ना। तो कुछ छोटे छोटे स्कार्फ तैयार किए जाते थे बेसिकली राजस्थान और गुजरात में, है ना, और उसको लोग सर पे बांधते थे। बेसिकली जो लेडीज़ होती थी वो सर पे बांधती थी। दैट वाज यूज्ड टू टाई ओके एट देयर नेक और एट देयर हेड, ठीक है। तो उसको बांधने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो देखिए दिस वाज ब्राइट कलर्ड प्रिंट। एक्चुअली होता क्या था कि उस क्लॉथ पे बहुत सारे छोटे छोटे, है ना, प्रिंटेड फ्लावरी डिज़ाइंस बनाए जाते थे। बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंटेड डिज़ाइंस बनाए जाते थे छोटे से स्कार्फ पे, ठीक है। तो दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड बेसिकली वुमेन यूज टू टाई अप दैट, ओके, एट देयर नेक और एट देयर हेड। दिस क्लॉथ वाज प्रोड्यूस्ड इन द राजस्थान एंड गुजरात। जो बंधना क्लॉथ था बेसिकली ये कहाँ प्रोड्यूस होता था, तो ये प्रोड्यूस होता था राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। दिस वर्ड, द वर्ड बंधना वो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड बंधना मीन्स टाई। देखिए जो बंधना वर्ड है, दिस वर्ड okay, this word was given by the European to that cloth, to that scarf. Basically that cloth was known in Hindi at the bandhana, okay, बंधन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बंधन बोलते हैं, है ना। हिंदी में उसको क्या बोला जाता था, बंधन बोला जाता था, लेकिन यूरोपियन ने उसको क्या बोला, बंधना बोला, ठीक है। यूरोपियन कॉल दैट क्लॉथ एज द बंधना। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस बंधन? बंधन मीन्स टू टाई, ओके, मीन्स दिस वाज अ स्मॉल स्कार्फ that was basically woven into the Rajasthan and Gujarat, that was used to tie, okay, that was used to tie by the women at their neck or at the head, okay, that was printed colored cloth, okay. Next is jamdani. Now see, this was fine quality of muslin in which decorative designs made। ध्यान देना, अभी आपने पहला क्या देखा, मुस्लिन देखा, ठीक है। मुस्लिन और जामदानी में अंतर क्या है कि जो मुस्लिन क्लॉथ था दैट वाज द प्लेन क्लॉथ, ठीक है। जो मुस्लिन क्लॉथ था कैसा था, वो एकदम प्लेन क्लॉथ होता था एंड दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, ओके।
तो लोग उसको खरीदते थे। लेकिन ये जो जामदानी था, जामदानी मुस्लिम ही क्लॉथ था, लेकिन उस पर क्या बने हुए थे, उस पर डेकोरेटिव डिजाइन्स बने हुए थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड पूरा प्लेन है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही जो मुस्लिम होता था वो प्लेन होता था, लेकिन जो जामदानी होता था तो जामदानी में क्या होता था, जैसे हमने इस पर लिख दिया, उसी प्रकार से जो जामदानी क्लॉथ होता था उस पर छोटे छोटे डिजाइन्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, दैट वाज द डेकोरेटिव क्लॉथ, ओके। एंड दिस क्लॉथ बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन द ढाका, you know, Muslim was also produced into the Dhaka. In same way, this Jamdani cloth was also produced into the Dhaka, and this was also produced into the Lucknow region. Okay, and in this way we have known about the major textiles what had great demand into the European countries. And you should know that these cloths had a great demand, so that European traders coming into the India, and they were buying these cloths, okay, at the very cheap rate from the country, and they were selling them into the Europe at the very high rate. समझ। तो होता क्या था कि इन कपड़े को तैयार करने के लिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो हमारे भारत के जो वीवर्स थे, जो कपड़े को बनाते थे, है ना, उनको एडवांस पैसा दे देते थे। जैसे मान लीजिए कि कपड़े का ऑर्डर जो दिया जाता था वो एडवांस में दिया जाता था, है ना। अब एडवांस में कैसे ऑर्डर दिया जाता था, तो एक्चुअली में जैसे मान लीजिए कि बंधना कपड़ा चाहिए, या जामदानी चाहिए, या मुस्लिम चाहिए, है ना, या छिंड चाहिए, तो किसी भी कपड़े का डिमांड इतना ज़्यादा यूरोप में था कि जो व्यापारी थे वो 2 साल 3 साल पहले ही, है ना, एडवांस पैसा दे देते थे वीवर्स को, और एडवांस में उसका डिमांड, है ना, रख देते थे कि यानी कितना कपड़ा बनाना है ना। तो दे वी आर गिविंग एडवांस टू द इंडियन वीवर्स टू प्रिपेयर दिस क्लॉथ, ओके, एंड दे वी आर सेलिंग दिस क्लॉथ इन टू द यूरोप एंड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट. Why? Because they were buying this cloth at the very cheap rate from the India, and this cloth had a great demand into the Europe, so that they were selling them at the very high rate, and in this way they were able to earn the huge profit. Okay,